We see a lot of people around us. Are they waiting on a railway platform or at the entrance of an airport? It appears as if they are the passengers waiting patiently for their respective train or plane to arrive as they prepare themselves for a long journey. Some of them appear worried, while others look tired. Some of them might be on the waiting list and they need to bide their time. Yet others are excited and happy as they sense their return home. Never has home appeared so beautiful. Did you guess who we were talking about all this while? Of course, they are people like us, but at the same time, they are different in one respect. That is, their own body is their enemy. Yes, they are none other than cancer patients. Cancer. What is cancer? Is it just a word? Cancer is not merely a word. It is also a scary word. It is scary because everyone feels that someone who's been diagnosed with cancer has a slim chance of survival. People throng various hospitals in search of a cure. But do people really survive cancer? Of course people survive cancer. Cancer is very treatable when detected early. But what is the real meaning of cancer? कैंसर का नाम सुनते मन को एकदम डर लगता है, भय आਉਂਦਾ बहुत। ये बड़ी नामराद बीमारी है। कैंसर एक बहुत डेंजरस बीमारी आ चुकी है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है ये। और ये चीज़ें तंबाकू से, सिगरेट से होती है। We may gather a number of opinions on cancer, but for our own understanding, we must know it scientifically and clearly. What is cancer? Is it the name of one specific disease? Cancer is not one disease, but many diseases. We call them all cancer because they share one fundamental feature, the abnormal growth of cells. Cancer is a generic term. It is used for a large group of diseases that can affect any part of the body. Our body is made up of billions of cells. Cells are the very smallest units of life which are found in all living things, including the human body. Normal body cells are born, grow and divide, creating new cells. Over time, they also die. But cancer cells just continue to grow and divide out of control and do not die like normal cells. Clusters of cells then bunch together to form a tumor. In short, we can say that cancer is an uncontrolled growth of cells. Cancer is a group of diseases. It's not a single disease, it's basically a group of diseases which is caused by the uncontrolled growth of cells. So what happens when the cells grow in an uncontrolled manner? They are clumped in one place and then they try to survive and displace the normal cells, and they either form a lump, or if they burst, they become a tube, they become ulcers and bleeding happens. So basically it's a group of diseases and has various signs and symptoms. Sometimes cancer cells break away from the original tumor and travel to other areas of the body, where they keep growing and can go on to form new tumors. This is how cancer spreads. The spread of a tumor to a new place in the body is called metastasis.
Since they are our own body cells, the body's immune system does not recognize the danger. Many people are afraid of cancer patients as they think they too may be affected by cancer if they stay close to any cancer patient. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या क्या डिजीज माना जाता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये होते हैं जो कि एक आदमी से दूसरा आदमी तक नहीं जाता, छूने से भी नहीं जाता। जैसे मैं इस प्रोफेशन से पिछले 36 ईयर से हूँ, मैं रोज़ 300 मरीज देखता हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कैंसर नहीं हुआ। इसलिए छुआछूत का बीमारी कैंसर नहीं है। Now, we know that cancer is not contagious. We cannot catch it from someone else who has it. Cancer is not caused by germs like colds or the flu. So we should not be afraid of anyone with cancer. Cancer is generally not inherited. But there are a few cancers which are passed on through male or female lines. Every year, thousands of individuals are diagnosed with cancer. Even those who are never touched by a single moment of illness can be touched by cancer. Knowing fully that cancer is a deadly disease, everyone is curious to know the causes of cancer. हमको शुरुआत में पहले फीवर हुआ, उसके बाद हमको दाहिना साइड से गले में एक तो गांठ टाइप का निकल गया। उस गांठ को हम दरभंगा में जब दिखलाए तो वहाँ बोले कि आपको कैंसर है। हम यहाँ से रेफर कर दिए हमको दिल्ली, तो हम यहाँ आकर के इलाज करा रहे हैं। और शुरू से हम तम्बाकू खाते थे। अब जब हम इस अथी में फंस गए, उसके बाद अब हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि भाई तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट मत खाया करो। It is shocking to know that 1 in 8 Indians is likely to be diagnosed with cancer in the years to come. 1 in 5 of these people will also die of it. So it would be wise on our part to understand some causes of cancer. ये जो कैंसर है, इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज। हम इसको लाइफस्टाइल क्यों बोलते हैं? कि जैसे टबाको सेवन करना, तंबाकू सेवन करना इन एनी फॉर्म, जैसे इंसान जो कि टबाको स्मोकिंग करते हैं उनका फेफड़े का कैंसर होता है। जो टबाको खाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में आपको पता है तंबाकू का सेवन होता है, काफ़ी फॉर्म में होता है। लोग खैनी खाते हैं, लोग स्मोकलेस टबाको लेते हैं, जैसे पान मसाला, पान पराग आजकल काफ़ी चर्चे में है। तो उसमें जहाँ भी आप खाते हैं, जहाँ टबाको आपके शरीर के स्पर्श में आ गया, वहाँ कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हमारे कंट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स दे डू नॉट स्मोक और दे डू नॉट च्यू टोबैको। आपको डेफिनेटली पता होगा कि उनमें कैंसर ऑफ द माउथ एंड चिक हमने पिछले 35 साल से देखते नहीं है। सिमिलरली आप अगर थोड़ी सी और एग्जांपल दे दूं मैं, जो इंग्लैंड अमेरिका में है, वो लोग पान खाते नहीं हैं, मुंह में पान चबाते नहीं है, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, खैनी नहीं खाते या पान मसाला नहीं खाते, लेकिन वो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि वो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका लंग कैंसर का इंसिडेंस रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिटीज़ में काफ़ी लंग कैंसर ज़्यादा है, लेकिन हमारे कंट्री में ये जो मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर, तालू के कैंसर ज़्यादा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हम वहाँ तंबाकू ज़्यादा देर तक रखते हैं। आपको पता है कुछ एरिया ऐसा है हमारे कंट्री में जहाँ लोग रिवर्स स्मोकिंग करते हैं। रिवर्स स्मोकिंग मतलब आपने जो सिगरेट है या जो हुक्का है, उसके जो बर्निंग एंड तालू में रखते हैं, उसमें हमारे कंट्री में पैलेट का कैंसर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके इनफ प्रूफ है कि टोबैको इज वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ कैंसर। एंड लेट मी टेल यू दैट टोबैको इज प्रोबेबली responsible for more than 40% of cancer. In actual terms, cancer is a lifestyle disease. Consumption of overly refined foods and the overuse of fat in the diet, components of tobacco smoke, are some of the important factors responsible for cancer.
Now we have come to understand that cancer is a lifestyle disease, like coronary heart disease or diabetes. Some unhealthy habits, especially an inappropriate diet, tobacco abuse, or drinking too much alcohol, and lack of exercise can be the risk factors. Aging is another fundamental factor for the development of cancer. The incidence of cancer rises dramatically with age, most likely due to a buildup of other risk factors due to the aging process. Not all cancers can be prevented by lifestyle changes. Some will occur for reasons beyond our control. The mantra, therefore, is prevent what you can, screen against what you can't. Screening refers to the application of tests to a population which has no clear signs of the disease in question. It is to detect unsuspected diseases while a cure is still possible. It does not diagnose disease but identifies people who require further investigation to determine the presence or absence of disease. Now the question arises, how do we find out that someone is suffering from cancer? Primary screening checks are the basic parameters of health. These include chest x-rays and blood tests and a physical examination by specialist doctors. Screening includes an ENT checkup, breast and cervix screening by a gynecologist, and of colon and the rectum prostate in men by a surgeon. If anything is out of the ordinary, doctors recommend that the person go to see an oncologist. As far as the treatment of cancer is concerned, I can understand that there are a lot of apprehensions amongst the public about the various modalities that are there. The three major modalities for the treatment of cancer are, of course, surgery, chemotherapy, and radiotherapy. And I am also aware that a lot of people out there who seem to be scared of these various forms of treatment. And because they're scared of these forms of treatment, they will actually end up receiving treatment from very dubious sources. They will go to faith healers, they will go and have some goalies, and they will have some powders which they hope will cure their illness. And a lot of these people, most of these people will finally end up with us with very advanced stages of cancer. कैंसर जो है ये डरने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि पहली बार जब होता है कैंसर आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और इसको इमीडिएट इलाज की ज़रूरत है मोस्ट ऑफ द कैंसर में. फॉर एग्जांपल आज मेरे को अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे को रात को अमेरिका जाना है, तो आइडियल ये है कि मैं न जाऊं, क्योंकि 2-3 दिन में भी काफ़ी नुकसान कर सकता है मोस्ट ऑफ द कैंसर्स. बट इफ़ यू से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, आप कोई बात नहीं, 2-3 दिन में जाके आप अपना डाइट रेस्ट्रिक्शन करिए, आप शुगर मत खाइए ज़्यादा, आप इलाज करते रहिए, आप वापस आने के बाद ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऐसा कोई जल्दी नहीं है. तो ये कैंसर दूसरे से इलाज में अलग है. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कैंसर का इलाज है, द फर्स्ट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट. अगर आपको डायबिटीज़ है, आप किसी में, ये नहीं बोल रहा हूँ डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. सपोज डायबिटीज़ आप किसी के पास गए और वो डॉक्टर सपोज स्पेशलिस्ट नहीं, आपको उसमें आराम नहीं आया, देन आप और किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं. आपके पास चॉइस है, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन के बाद जा सकते हैं. बट कैंसर द फर्स्ट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. So how do we detect cancer early and save one's life? The simple answer could be, we should learn to recognize the early signs of cancer. ढाई 3 साल के बाद 97 नवंबर में आकर के वो जो मेरा आधे सेंटीमीटर का लंप था ब्रेस्ट में, वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर का 5 महीने के अंदर ही हो गया. जब मैंने उसको देखा तो थोड़ी घबराहट में मैंने अपने हस्बैंड से ये बात की और मेरे हस्बैंड ने भी रियलाइज़ किया, तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. जब मैं डॉक्टर के पास गई
तो डॉक्टर ने कहा जब 2.5-3 साल से आप चुप थे तो अब तक तो आपका सारा फैल ही चुका होगा, पर अब तो एक फॉर्मेलिटी है कि आप इलाज करवाइए और देखिए कि क्या होता है। मैंने जब टेस्ट करवाया तो जैसा डॉक्टर को शक था पॉजिटिव कैंसर निकला, लेकिन भाग्यवश मेरी जो स्थिति थी वो 2B थी, स्टेज 2B थी। मैं यहाँ ये बात ज़रूर सबको बताना चाहूँगी कि अगर मैंने 94 के एंड में जब मुझे पहली बार जो आधा सेंटीमीटर का एहसास हुआ था तभी बताया होता तो शायद सिर्फ सेल रिमूव हुआ था और मेरी ब्रेस्ट बच गई होती। मुझे शायद बहुत कम कीमो लगती, मुझे परेशानियां भी कम होती, खर्चा भी कम होता और दोबारा कैंसर होने की संभावना से भी मैं पूरी तरह मुक्त हो सकती थी। One should go for regular cancer screenings. There are some cancers you cannot prevent. Regular annual screening ensures that any new cancer that is picked up in time can be treated. One must visit the Cancer Detection Center in Delhi, run by the Indian Cancer Society. It is open from Monday to Friday between 9:30 to 12 p.m. Chest X-rays and digital blood profiles may be done by paying a fee which is very nominal. All examinations are done by 3 specialist doctors: ENT surgeons and gynecologists. Mammograms, ultrasound and other testings are also done at concessional rates. Cancer is completely curable, controllable and treatable if is very important, if cancer is caught in the early stages. 90% of the patients will recover fully, and when they are survivors, they are able to lead a very normal life. मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मेरे को ऐसे ही लगता है कि जो मैं कर सकती हूँ दूसरों के लिए करूँ, और इसीलिए मैं डिफरेंट अस्पतालों में जाके जो मरीज़ और उनके जो परिवार हैं उनको मैं सहारा देती हूँ, उनको बीमारी के बारे में समझाती हूँ। मुझे 1984 में ब्लड कैंसर हुआ था और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, मेरी बेटी छोटी थी, तो मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं था। तो मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी को अप्रोच करा। उन्होंने ट्रीटमेंट के इंडियन कैंसर